Hi everyone, this is Infi Desires Doodle, your number one place for doodle, calligraphy, DIY and hand lettering videos. So in today's video, we'll go through step-by-step way to do line doodle art. बहुत easy है. Let's get started. So for this, you only need a paper and pen basically. मैंने यहाँ पे dotted journal use किया है and a 0.8 fine line pen. You can use any sketch pen, any ball pen, and circle बनाने के लिए you will need either a stencil or a compass and a ruler. That's it. तो first things first, मैंने यहाँ पे 3 circles बनाए हैं. Now for the first one, मैं horizontal lines बना रही हूँ. And in those horizontal lines मैं अलग अलग डिज़ाइन करने वाली हूँ. Like on the top मैं सिर्फ standing lines बना रही हूँ. In the next space मैं यहाँ पे cross lines बनाने वाली हूँ. Then again in the next line I will do standing lines. So this is basically a way to do your line doodle art. Just by using lines you can create a very good doodle art. एंड इसका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट इट हेल्प्स यू रिलैक्स. सो इसमें ज़्यादा आपका दिमाग नहीं यूज़ होता है. ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट मेक लाइन्स. इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम बट इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग मेथड. नाउ फॉर द सेकेंड वन अगेन मैंने स्टैंडिंग लाइन्स बनाए हैं एंड आई एम डूइंग क्रॉस लाइन्स एंड देन एवरी ऑल्टरनेट स्क्वायर मैं कलर कर रही हूँ. Also, just a reminder, don't forget to subscribe to my channel, like and comment what you want to see next. Thank you. And now for the last one, again मैं थोड़ा slanting lines बना के और on the upper space मैं right side के towards slant lines बना रही हूँ. And in the next one मैं left के towards slant line बना रही हूँ. So this is just various ways in which you can use lines to do your doodle art. ये बहुत ही relaxing form है. This is something which you can just scribble out when you are stressed, but it turns into a beautiful art. So this is the video for today. I hope you like this video. मुझे comment में बताना आपका favorite कौन सा है. And stay happy, stay safe, and I will see you soon in the next video. Thank you so much for watching the video. I hope you liked the video. Don't forget to hit the like button, the share button, and do subscribe to my channel. Tell me what did you like the most in the comments below, and I will see you soon in the next video. Till then, stay happy, stay safe.